Hello. Okay, let me check quickly if we are live or not. Okay, connected on YouTube properly. And yes, so we are live on YouTube, but due to some problems, issues, I cannot properly see it. But yeah, and I'm okay. Yeah, Twitch is also going good. And now I'm just going to check few of these things. Okay, yeah, there is nothing more. Okay, so yeah, we are live. I okay, so we are going to continue with our new next session of the book reading for the Learn C++ by example. Last time I had to cut it short, and this time I think I can stretch it to 12:30 at least. So yeah, still early. No, sorry, we are late, kind of actually 12 minutes into this session. So okay, anyways, yeah, I am also thinking of playing some music, but the thing is, I will not have it on the stream because it may give out problems for the copyright issue. Last time that happened, so I had to edit some of the stream sessions. But yeah, anyways, I have made sure that that does not happen again, and this time I am going to take proper care as well. So let me just quickly create a new note and template. Okay, where is the stream template? Didn't I created a okay, stream template is not available. What can we do? Uh, okay, let's just create a temple right now. Uh, copy node. How do you copy the node? Hmm. Okay. Make a copy. Yes. Okay. Make a copy and let me just quickly do this. Replace all of this with this and okay. Wait. No, this is wrong. I did the wrong thing here. What I have just copied is the actual data showcase, which we are not to disturb. And this is what I have to take and pass it down to here. This will get converted into a template. So I have these. I have to remove this, but I have to keep this tag. I am going to create. Okay, this is the stream URL, which can be empty. This is the text field for the book we are reading and some of the other things. Let me just quickly copy this as well for the concept. Sorry for the created. So yeah, I am going to have a created date here and okay, wait. Does it has to be okay? That is something entirely. Okay, no. Wait, that was wrong. That was wrong. How do you make a created? Hmm, that is good. Next up, we have this as well. Book empty, type stream, and let's rename it as stream. Okay, cool.
Now, if we go ahead and try to apply stream here. Okay, yes, it is working. Great, great, great. Let me just quickly add this. So I also have to update the name as well. So this is the name, and today's date is 27th August. So I am going to continue. Oh, no, 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 no. That is not something we have to show. Control. Hmm. I think it's better I bookmark this and I also take out this thing as well. So today I am thinking of covering a lot of ground because it's a very small book, only 249 pages, and cutting out some of the basic preface, acknowledgement, covers, and other bits of information which is related to the publishers and all that metadata you can say. We have still not made much of the progress. Like we are only 8 pages into this. Let me just quickly check if I'm properly speaking or is the voice not sufficient enough. Quickly. I also need to start that. Hmm. Okay, I think this is good. Working fine. Is it? Hmm. Yeah. Voice is good. I just confirmed over on my phone. Now, another last thing which I have to do is focus music. That is important. Uh, hmm. I'm also going to have to check that this does not get into the stream. So let me quickly just again. I think the voice is going there. Yeah, that seems to be the case. Oh, oh, that was a problematic issue. We just had feedback, like loop feedback. Is it still going on? I hope so. I do hope not. Okay, it is good. I have confirmed I've been verified. So yeah, let's not worry about that. 10 minutes into this, and we are still not started up. Uh, what we are going to do is basically start with some of the basic concepts, and I'm quite excited toward this. This chapter is almost over at 12, so I am going to hope that we finish this one today.
very quickly and then move along. So I forgot how did I change the things. Yeah, okay. We did went whole point notation type. So hmm, hello world. I think I can make some points here. Hmm. Um, it is a conventional habit of starting any programming language with a print statement that says hello world. Uh, I think I'm going to keep this in a highlighted form like this. Yeah, this is the one. So I also should have like shared this over. Maybe, yeah, that would have been a better choice. Just hope I can quickly grab the link and share it over here. Something's been acting up on my Chrome browser, it seems. I am not sure what it is, but yeah, I'm starting to get feel like it's time to make a switch to some other browser. I have already been starting working with the Zen browser. Yeah, I have started using Zen browser. Anyways, I think I also have where it is. I think I'm going to keep this here and I'm going to bring out this to here and maybe like hmm, I am going to yeah okay let me also quickly do one another thing is that properties no not now not now not now not now okay let me just quickly do this by screen capture pipe here add another screen okay hopefully this got fixed. Okay, I hope that did not cause any issues during the live runtime. What I was trying to do is make sure that this window is up. So, anyways, last time in basics, I already did a simple hello world program. No, sorry, wrote a simple hello world program. So, this is how it came out to be. I think I can maybe make it a little more zoom. Yeah, this is good. So yeah, I think I'm going to pass over this and
C. So last time I forgot that I was supposed to use G++ compiler, not the GCC, because that is used for the basic C programming language, not the C++ language. And so yeah, moving on, it basically shares the main program code and then what we have to do in order to execute this. Saving this file into a .cpp extension, we can compile it, and then using this GNU compiler collection G++, we can output it. So does this hyphen O is the output uh, command line, like output argument, you can say. Flag, sorry, hyphen O is the output flag, which then we pass the name of what it will be outputted into. So we can, if we don't assign it, the general notion is that it will compile and save it as a.out file. Next up, the book already assumes that we know the include as statement, the scope resolution operator, which is the dot dot, and no colon, and the stream insertion operator, which is this. Uh, I think this is the greater than symbol. Yeah, greater than symbol double. The code just inserts a greeting into the standard cout inside a main function and the user entry point for executable code. So that is the main gist here. And what is more different here is that we knew that, however, the return type at the end of a function name may be unfamiliar together with the keyword auto at the start of line. So yes, this is something I did not know, and when I had a semester of C++ in college, so we were actually using int there, but now we can see there is auto. So what it does there is that we can write int main here instead, as we always used to, but C++11 introduced this feature, and many people started it using everywhere for consistency. And yes, so mm, we can like we can use uh, int main for trailing return type of the main function, but with the C++11 standard, uh, people now prefer to use auto keyword for consistency. Yes, consistency. Now, this became useful if we want to reduce the type a function returns, and our hello program doesn't need a trailing return type, which is actually true because when we used to do int, it will return exit code 0, which basically means that the program compiled successfully and executed with no issues. So yeah, then we have uh, main is already special in that it returns 0 by default. So it does not need a return statement, even though it returns an integer value. Without a trailing return type, some template functions can be very tricky to specify. So we can consider using a template function example. We can see that this is a program to add two numbers using the operator plus, but for example, if we don't assign an integer and do auto x equals to 1 plus 1.23, which is generally two different type of data types being used here. One is a simple integer and another is a double value, basically float. So
How about we go over here and try to make a new file like add.cpp. So now hash include uh, IO stream. I sometimes forget what we are using here. IO stream, right? IO stream and stdioh. Oh, okay. So auto main. Hmm. Let me try first doing this in a int main function. Let's see what happens then. If we do int x equals to 1 and double y equals to 1.23, and then I just simply do this return x plus y, and I hope if I try to, okay, this is kind of maybe this is good enough. G plus plus, oh have to be inside basics ls, yeah, G plus plus add hyphen o add dot out. Hmm. And if I now try to execute, what will happen? It already, oh, I forgot I wasn't printing it. I only returned it. See out. Uh-huh. This and yeah, see out. I have to use std see out here. That is the more important part here. The program already compiled and we get a 2.23, which is accurate. But then how the auto helps is okay. So wait, the question was that we without a trailing return type, some template functions can be very tricky to specify. We can see that using a template function example. Okay, so I did not need read the full scenario here, but then we what we are trying to do is prove the opposite here. So we already know that integer return type will work, and if I do, but wait, even if it is a int return trailing type, we still got our double value. Auto main must return int fix available. Hmm. Let me check what is the okay. Uh, Auto main and it needs a proper return type. What is this? We are using a function without why are we not using a pointer? Wait, let me quickly check. We can use the plus operator easily enough to add numbers. Okay, yes. For example, auto x 1 plus 1.23, that's our friend auto again. If we try to sum a integer and a double, the result is a double due to integer promotion. Okay, integer promotion. Is that a rule in C++? Like, can like program automatically do a integer? Let me do a quick search here if it is true. Does CPP do integer promotion on operations of integer and double data types? If so, why and how? What purpose does it do? Hmm. Okay, C++ does not perform integer promotion on an operation between a int or a double. Why is this saying no? Hmm. There is a mention of integer promotion in C, but then the Google search result value described as no. It does not do a integer promotion. It does a floating point
what is it that is saying here? Floating point conversion. But I think I will stick to what it is saying here. So yeah, let me quickly do this and do this and this. Okay, yeah, that is cool. Hmm. I think I'm going to add this all here uh, with this integer promotion allows the to use the plus operator easily enough to add. For example, this will be 2.23. So the result is a double. Okay, yes, we understand now this part. But if there is a different scenario, if where we want to use a general purpose addition function, we can attempt to write overloads for every possible pair of parameters, or more sensibly, write a template function. Even better, you can use one that is already written for you. The functional header includes a definition of plus. In fact, this header contains two definitions, one of which sums two programs of the same type, which we create by saying standard std plus int to add two integers. But since C++ 14, a version that reduced the template argument types, was introduced using standard plus without int, uh, fix the new specialization which works out the types for us. Or if we try the first version, 1.23 gets converted to an int. You get a 1 plus 1, which some compilers warn about, whereas second as okay. First of all, let me check what is a template uh, functions. Exactly what is a template function here? Hmm. A function template is declared using the template functions, more accurately called function templates in C++, are the blueprints that allow a single function to operate on multiple arbitrary data types without the duplicating duplicating the underlying logic. Cool, great. So what I'm going to do is maybe check these results here and also do this as well. So I have made some key habits known is that for every proper result, I will be making use of wiki links. That is more important. Hmm. Yeah, after C++14, oh, no. What I can write it as before C++, we were supposed to use the plus operator from the functional header like all no, sorry, it was like this std and plus end. Yes, this is the proper way. This is how it was used to be done to add two integers.
However, after this, we can simply use the std plus the new specialization. Hmm. Okay, this is now good. Proper working showing up. I think I have to do it like this. Hmm. Anyways, moving on. I am going to try writing this code actually, so I can try it myself. Hmm. File details. Okay, file details. It is showing file details. I want a template add.cpp. Hmm. Hash include use stream auto main. So like int int x equals to no, this is not what we were supposed to use. We were used supposed to use the functional headers. So let me just quickly write that down. Functional. Okay. And now if I do this std cout std plus and type simple numbers maybe. Huh. Okay. Like what I can write is 1 and 1.23 maybe. So now what I will do is another this and then print and for next line. Hopefully this is proper. Huh. Expected identifier. Where is identifier कहाँ चाहिए है? This is how it is supposed to look like, and it is no, this is not how we wanted this. Okay, wait. So problem is that everything has been formatted for line by line operations. First, we have to fix that. Okay, yes, this is good. Okay. I wrote this after this, so now that is why this is problematic.
Now this is over. Okay, there is no issue. Hopefully this will compile in properly. Hyphen o template. I'm not going to assign this. It's a long name. A comes out, A dot out, and I still get the 2.23. Okay, that is cool. Uh, let's see. Uh, oh, that is template तो आ गया लेकिन इसके बाद ठीक है. I'm going to read further is about the we can we can we used to you are used to function starting with return type and then having a name and parameters such as int main. The return type is given first, but to specify the return type, plus needs to express the addition operation for the two function arguments. Hmm. Which is much easier to do with parameter names, but those are not visible to the usual return type. So the trailing return types makes using parameter names to specify that return type possible. Hmm. This part is something of a big brain issue. I am not quietly understanding this, what is happening here. In simple words, अगर हमें हम ऑलरेडी ऐसे फंक्शंस लिखने के आदी थे जिसमें हमें एक रिटर्न टाइप से शुरू करना था और एक नाम था उसका और एक पैरामीटर था जैसे कि इंट मेन. अब रिटर्न टाइप पहले दिया जाता है और उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं तो हाँ नहीं, रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए प्लस को एडिशन ऑपरेशन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है दो फंक्शन आर्गुमेंट्स के बीच. और ये करना बहुत इजी होता है पैरामीटर नेम्स के साथ, मगर वो विजिबल नहीं होते रिटर्न टाइप के साथ, यूजुअल रिटर्न टाइप के साथ. हम्म. अब जो ट्रेलिंग रिटर्न टाइप है वो मेक श्योर करता है कि जो पैरामीटर नेम्स हैं वो अपना रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करे पॉसिबली. हमें ऑटो कहने की ज़रूरत होती है स्टार्ट पे ताकि हम इंडिकेट कर सके कि रिटर्न क्या होगा ट्रेलिंग स्पेस के बाद. ओके. डिक्लेयर टाइप. डिक्लेयर टाइप एक सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं जिसमें ऑपरेटर फॉर द प्लस स्पेशलाइजेशन हो रहा है यूज. सो जैसा कि हम पहले डिक्लेयर करना चाहते थे कि एक फंक्शन जो दो चीज़ों को लेके उसका सम रिटर्न कर रहा था, हम एक टेम्पलेट यूज़ करके दो टाइप नेम्स के साथ अलाउ करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स को सम ऑपरेशन में. एडिशन इटसेल्फ तो इजी पार्ट है और वो बेसिकली प्लस ऑपरेटर का यूज़ करता है. डिक्लेरेशन में ऑटो है स्टार्ट पे और टाइप है एंड में. ठीक है. तो ये वही है. इन्होंने टेम्पलेट लिया है टाइप नेम टी टाइप नेम यू. ऑटो डिफाइन किया पहले सिंपल प्लस टी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस ट्रेलिंग टाइप देन डिक्लेयर टाइप एल एच एस प्लस आर एच एस रिटर्निंग एल एच एस प्लस आर एच एस. अब ऑपरेटर फंक्शन एक टेम्पलेट है जो दो डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर रहा है टी एंड यू. फॉर द लेफ्ट हैंड साइड हम एल एच एस हैं एंड राइट हैंड साइड आर एच एस है बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्टिवली. अब जो रिटर्न टाइप डिक्लेयर हुआ है डिक्लेयर टाइप यूज करके स्पेसिफायर का उसका एक्सप्रेशन है साथ में एल एच एस प्लस आर एच एस. तो अगर हम स्क्विंट करें हम ये देख सकते हैं कि ये कितना सिमिलर है उस बेसिक मेन फंक्शन के सिंटैक्स से जो हमने पहले देखा था. अगर हम इन्हें साइड बाय साइड रख के देखें तो ये हमें ऐसे दिखेंगे ऑटो मेन इंट and then we have auto simple plus type name t and u and declare type. हाँ बात तो सही है. हम देख सकते हैं कि ऑटो को पहले फंक्शन नेम से
फंक्शन नेम के पहले यूज़ करा गया और पैरामीटर्स के। फिर एरो और ट्रेलिंग रिटर्न टाइप यूज़ किया गया दोनों केसेस में। जब हम 1 और 1.23 को ऐड करते हैं, जो पैरामीटर टाइप्स हैं वो रिड्यूस किए जा चुके हैं इंटीजर और डबल में। अब ट्रेलिंग रिटर्न टाइप यूज़ करता है एक्सप्रेशन का, जो हमने ऑलरेडी वहाँ डिफाइन किया था डिक्लेयर टाइप में, ताकि हमें डबल वैल्यू डबल टाइप में रिटर्न मिले आंसर। ठीक है, ओके, गुड। आई थिंक आई एम गोइंग टू make use of this using the नहीं, ये नेक्स्ट लाइन लाना चाहिए। using the template function with auto keyword and trailing return type, we can use it to create a function that will have a and return type is declared using declare type. For more context, refer to this section here. अब मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा ऐड कर दूंगा। अरे यार। हम्म। ओके, ठीक है, इसका मतलब मैं एक ही टाइप की एक ही जगह की वो उठा सकता हूँ। ओके, कूल। मूविंग ऑन। What you will learn from reading this book, you will learn how to use some new elements of the language, जैसे कि ranges से लेकर random numbers तक, and learn several other simpler ways of doing things on the journey. बुक स्टार्ट होती है एक वेक्टर से और वहीं से आगे बढ़ती है। वेक्टर एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिवाइज करने का और फिर बाद में और भी नए फीचर्स को लर्न करने का, जिसमें आते हैं हमारे रेंजेस, व्यूज, फंक्टर्स एंड लैम्डास। एक बार हम कंफर्टेबल हो जाएं फिलिंग, डिस्प्लेइंग, क्वेरिंग और मैनिपुलेटिंग एक वेक्टर को यूजिंग रेंज और एल्गोरिदम्स, हम तैयार हो जाएंगे अदर पार्ट्स को यूज़ करने के एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, जिसमें इंक्लूड है टाइम, क्रोनो, random numbers, or finally core routines. Hmm. But if the reader has named this chapter what you will learn from reading this book, then we can assume that okay, it will definitely be a part, वो एक बेसिकली बड़े पार्ट को बता रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट है I can make use note of this from this book. We can start learning from a vector and then build from there using lambdas, ranges, and random numbers. We can also then get comfortable with displaying, querying, filling, and
manipulating a vector using random numbers, ranges, lambdas. We can also learn to use more functions of the standard libraries such as time, chrono, oh sorry, chrono, not chroma, yeah, that is cool. Now next, अब आगे करते हैं। बेसिकली रेंज बेस्ड फॉर लूप्स इंट्रोड्यूस हुए थे सी प्लस प्लस 11 में, जिसने लैंग्वेज को काफ़ी इजी कर दिया था। अब हम इन्हीं का यूज़ करके किसी भी कंटेनर को वॉक थ्रू कर सकते हैं बिना इसके नीड के कि पहले हम इटरेटर्स में जाएं। गिव मी जस्ट 1 मिनट। Okay, I'm back. Just needed to get some water into the system. Okay, it's already been 32 minutes, I think. 25 minutes more, and then keep shut it all down. So moving forward, ठीक है। ओवर टाइम फुल ब्रोन रेंजेस बहुत ही स्टैंडर्ड बन चुका था, जिससे हमें कन्वीनियंस और प्रोवाइड हुई, और साथ ही साथ हमें इटरेटर्स का डायरेक्ट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। साथ ही इसके साथ हमें और भी चीज़ें ऑफर हुई, जैसे कि यूनिफाइड लुकअप और एक्स्ट्रा सेफ्टी। पहले ये पॉसिबल था कि हम पहले एक कंटेनर के स्टार्ट पर और एक कंटेनर के एंड पर ही एक एल्गोरिदम, एक मिनट, लेट मी रीड दिस क्विकली एंड प्रॉपर्ली। Previously, it was possible to pass the start of one container and end of another to an algorithm and not realize this until something horrible happened at runtime. Ranges avoid that problem. You will become familiar with using ranges to view and copy the contents of a container. By the way, container क्या था यहाँ पर? ठीक है। बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले पॉसिबल था कि हम एक कंटेनर की स्टार्ट को और एंड किसी दूसरे कंटेनर के एंड को एक एल्गोरिदम को पास कर सकते थे, बिना ये जाने कि जब तक उसमें कुछ रन टाइम में गड़बड़ी ना हुई हो। रेंजेस कॉन्सेप्ट की वजह से हम ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं, और हम इसका यूज़ करने में और भी फेमिलियर होंगे, जिस जहाँ पे हम उसका डेटा व्यू कर सकते हैं या किसी दूसरे कंटेनर का कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। हमें इसके बारे में और पता चलेगा, और जिससे हमें बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम क्लास में पढ़ते थे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर्स। That is a very good point. Just 3 years back, I was using default and all these concepts and keywords. We will learn how to use the new random number distribution, और अगर हम C का rand फंक्शन याद करें तो ये नई अप्रोच बेसिकली शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, मगर ये बहुत ही पावरफुल है। अगर इसका सही से यूज़ किया गया तो ये आपको मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करेगा, जो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि जब आप किसी रूलिंग डाइस या शफलिंग डेक ऑफ कार्ड्स की प्रॉब्लम को सिमुलेट कर रहे हो। हाँ, ये सारे नंबर गेम्स रैंडमनेस पे चलते हैं। बेसिकली आप एक सेल्फ कंटेंट प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो, एक नहीं सॉरी, ये गलत सेल्स में बोल दिया मैंने। सेल्फ कंटेंट प्रोजेक्ट्स का यूज़ करके हर चैप्टर में हमें ये मौका मिलेगा ये जानने का कि सभी तरह के नए और पुराने फीचर्स कैसे काम करते हैं। साथ ही हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें नए फीचर्स भी आराम से समझ आ सकते हैं, उन्हें जानना कि कब वो यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, किसी भी idiomatic वे में। ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस वर्ड, नहीं 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 सॉरी, मैं ये पूरा का पूरा उठा लेता हूँ और इसे ही कॉपी करके डाल देता हूँ एज अ नोट, कि इस बुक को पढ़ने से और क्या मिलेगा। प्लस
इडियोमेटिक वे। अब इडियोमेटिक वे का मैं एक नोट बनाने जा रहा हूँ अलग से। इडियोमेटिक वे। बाय द वे पता नहीं कोई होगा भी या नहीं, क्योंकि मेरा क्रोम ब्राउज़र बड़ा वो कर रहा है हैंग। लाइक लोड हो चुका है ऑलरेडी, बट एक मिनट, इसको मैं वो कर सकता हूँ पॉप आउट। अगर पॉप आउट कर देता हूँ तो बेहतर है, मुझे कम से कम दिखाई तो देगा कि कौन चला रहा है या कोई है अगर। पॉप आउट द चैट एंड देयर वी गो। ठीक है। हाय एवरीवन, बुक रीडिंग सेशन 3, लर्न C++ बाय एग्जांपल्स। आई थिंक कोई नहीं है, चलो ठीक है, नो वरीज। या तो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, इडियोमेटिक वे का क्या मतलब था? इडियोमेटिक वे का मतलब है जिसमें आप सबसे बहुत ही मोस्ट नेचुरल, कॉमन और एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि ऐसा कोड लिखना जो नेटिव कम्युनिटी रूल्स का यूज़ करता है, फॉलो करता है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटेड हैबिट्स। ओके, सो इसका मतलब अगर मैं डोंट बोलता हूँ मगर कम्युनिटी वे अगर डू नॉट है, देन आई विल हैव टू डू नॉट। दिस वाज अ गुड कॉन्सेप्ट नोट। मे बी कॉन्सेप्ट नोट तो नहीं है, रेफरेंस नोट होगा एक तरह का। इसे रेफरेंस नोट ही बना देता हूँ। इडियोमैटिक वे। हाँ ओके, सोर्स इसका कहाँ होगा और बात इसकी कहाँ होगी, ये भी देखना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ लगाते हैं इडियोमेटिक वे, जो कि हमें यहाँ मिल जाएगा। देन मैंने इसे यहाँ लगा दिया है। सोर्स इसका क्या होगा? ए सी सी यू का सोर्स क्या था यहाँ? ए सी सी यू का तो लिंक डाल रखा है ना। लेट मी क्विकली सर्च अ प्रॉपर आर्टिकल। ये तो स्टैक ओवरफ्लो खुल गया। आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली, ये बहुत है, इनफ है ऐड करने के लिए। इफ आई गो ओवर एंड डू अ क्विक रीलोड ऐप विदाउट सेविंग। ओके, कनेक्ट तो नहीं हुआ लेकिन काम हो गया। रेफरेंसेस एंड ये आपस में जुड़ गए। 2027, 2027 की स्ट्रीम नोट आ गई मेरी। Day is already over, but still we can add it here. So 2026, and yeah, this is good. Now properly highlight हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इतना साइज आउट क्यों हो गया? ठीक है। समटाइम ओपिनियंस ऑन द बेस्ट वे टू डू थिंग्स डिफर कर सकती हैं। हमें एक ट्रेलिंग टाइप दिखेगा अर्ली जो होगा ऑटो मेन इंटीजर, बट सम पीपल को ये सही लगता है, लेकिन हर कोई मतलब कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, ये हर कहीं यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। और ये लैंग्वेज का एवोल्यूशन ही हमें इस बात के परे ले गया है
आर्ग्यू करने के अलावा मतलब इस आर्ग्यूमेंट के आगे ले चुका है, जिसमें हम ब्रेस प्लेसमेंट के बारे में बहस करें। साथ ही साथ ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। इस बुक में अल्टरनेटिव है, और साथ में साथ फर्मली सिटिंग ऑन द फेंस व्हेन इट कम्स टू सच डिस्कशंस सो दैट यू कैन so that we can concentrate on trying to write some code and experiment with new ways of expressing yourself. Okay, ठीक है। कुछ प्रो टिप्स। ओके, लेट्स गो। ये मुमकिन है कि आप हो सकते हो या बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो सकते हो जब आप लर्न कर रहे हो इस किताब से, और स्पेशली तब जब आप लर्न कर रहे हो या टैकल कर रहे हो कोई बड़ा टॉपिक। इसे इन्हें इन कुछ टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना रास्ता बना ही लेंगे। पहला है जिसमें नए फीचर्स हैं जैसे कि सिंटैक्टिक शुगर, एंड सेकंड है कई सारे ऐसे एलिमेंट्स कोड के जिसमें पंचुएशन का यूज़ होता है, जो देखने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं या दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, इफ़ यू वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट, अच्छा, अगर आप जानना चाहते थे कि इस सिंबल का क्या काम है मेन फंक्शन में पहले, तो आप कहाँ स्टार्ट कर सकते हो। पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आंड्रेस वर्टिका सी प्लस प्लस इनसाइट्स। सी प्लस प्लस इनसाइट्स का टूल, एंड ये तो बड़ा एक सिंपल सा लग रहा है। इसे रन कैसे करूँ। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ये क्या करा है इन्होंने। इन्होंने सी एसटीडीआई का यूज़ करके एक कोड लिखा है सिंपल सा, कॉन्स्ट कैर एर। एरे का साइज है 10, उसमें 4 एलिमेंट डाल दिए फॉर कॉन्स्ट कैर, हर कैरेक्टर को प्रिंट करवाया। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है। यहाँ पहले इन्होंने एक रेंज सेट करी कैरेक्टर, और उसके बाकी एलिमेंट्स को एम्प्टी डिसाइड कर दिया। हम्म इसका अलग से एक नोट लगा देता हूँ। इन्हें छोटा ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। सी प्लस प्लस इनसाइट आपका कोड ट्रांसफॉर्म कर देती है, और उसके पीछे की डिटेल शो करती है, जिसमें आपको नए सी प्लस प्लस फीचर्स समझ में आ सकते हैं। ये बेस्ड है सी लैंग के ऊपर और आंड्रेस की खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी प्लस प्लस। अगर हम प्लस टाइप करते हैं तो ओके, हम अगर वो प्लस फंक्शनल हेडर वाला कोड टाइप करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, सी प्लस प्लस इनसाइट का आउटपुट। हम इसे डायरेक्टली ट्राई भी कर सकते हैं। इस इनसाइट से हमें बहुत कुछ चीज़ों का पता चलता है, और ये भी कि जनरेटेड कोड सी लैंग के ऊपर है। ये हमेशा तो काम नहीं करता अंदर दूसरे कंपाइलर्स पे, लेकिन जो 1.4 की लिस्टिंग में शो किया गया है वो ट्रांसफॉर्म ट्रेलिंग रिटर्न सिंबल के साथ एसटीडी प्लस इंटीजर सीरियलाइजेशन और विदाउट एनी सीरियलाइजेशन वॉइड स्ट्रक्चर यूज हुआ है। वॉइड बेसिकली वो वाला स्पेशलाइजेशन जिसमें सी प्लस प्लस 14 स्टैंडर्ड के बाद वो रिमूव हो गया था, तो डायरेक्टली ये ऐसे यूज़ हो पा रहा है। तो इनसाइट के अंदर वो हमें देख सकते हैं कि वो एम्प्टी सीरियलाइजेशन वाले के अंदर वॉइड आ गया है, मतलब वॉइड आया नहीं है, वो वैसे इन डेप्थ डिटेल में वॉइड है। अगर हमें फंक्शन समझ में नहीं आया है तो हम सी प्लस प्लस इनसाइट का यूज़ कर सकते हैं क्लूज के लिए। ओके गुड, ठीक है।
अब अगली चीज़ जो हमें याद रखनी होगी यही कि सारे कंपाइलर्स सभी फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक से ज़्यादा कंपाइलर ट्राई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कम से कम भी तो हमें कम से कम ऑप्शन स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस रिलेटेड विजुअल स्टूडियो और हाइफन हाइफन एस टी डी सी प्लस प्लस 20 या जी प्लस प्लस यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इफ़ यू कांट फेस हैविंग टू सेटअप, अगर हमें ज़्यादा एक से ज़्यादा टूल सेट करने का नहीं है तो हम ऑलवेज सी प्लस प्लस कोड को डिफरेंट कंपाइलर्स में ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैट गोल्ड गॉड बोल्ट के कंपाइलर एक्सप्लोरर में, जो कि मुझे देखना है। मुझे ये वाला ब्राउज़र भी इतना मज़ा नहीं आ रहा अभी स्टार्ट में। ठीक है, सी प्लस प्लस इनसाइड एंड देन वी हैव द सी कंपाइलर ऑनलाइन ऑफ मॉड बोल्ट, सॉरी नो, गॉड बोल्ट। ठीक है, मैं इसे भी एक तरह से कॉपी कर लेता हूँ। प्रो टिप के अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट अप, ये बुक आपको ये बुक कोशिश करेगी कि आप कॉमन पार्ट्स का ध्यान रखें, और अगर आप और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, साथ ही सी प्लस प्लस इनसाइट के साथ। हर एक लिंक, ईच हैज़ अ लिंक टू द अदर, सो व्हाई नॉट यूज बोथ। अब पहले अपना समय टूल चेन सेटअप करने से पहले सी प्लस प्लस रेफरेंस के कंपाइलर लिस्ट सपोर्ट के उस पर जाके चेक करें नए फीचर्स पर, जिससे आपको ये मदद मिलेगी डिसाइड करने में कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। ये एक बहुत ही अलग ये एक और अलग ग्रेट रिसोर्स हो सकता है फंक्शन सिग्नेचर्स चेक करने का, और साथ में ये फाइंड करने का कि कौन सी स्टैंडर्ड हेडर फाइल की आपको ज़रूरत है इस पर्टिकुलर फीचर के लिए। फाइनली अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हमें पैनिक नहीं करना है, कंपाइलर हमें फिर भी बता देगा कि कितने सारे एरर्स हैं। अगर हम कोई सेमीकोलन भूल गए या टेम्पलेट कोड भूल गए, नए कंपाइलर्स आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे, लेकिन वो आपको कई सारे एरर के पेजेस भी देंगे जिसमें आपको देखना होगा। कई सारे कंपाइलर्स ट्राई करते हैं कि वो और भी थोड़ा बेहतर हो और मददगार हो, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पहले पेन मिल चुका है और हार मान चुके हो तो ये अब चीज़ें आसान हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको इनकम्प्रिहेंसिबल एरर मिलते रहे टाइम टू टाइम और आप उन्हें सबको फिगर आउट नहीं कर पाए, तो किसी ऐसे से मदद मांगे, और सबसे पहले तो अपने पहले एरर पे स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर तब भी बात नहीं कर बनती तो ट्राई स्टार्टिंग एट द लास्ट एरर और एटलीस्ट फाइंड वन पॉइंटिंग एट योर कोड। ठीक है, अगर पहले वाले से बात नहीं बनती तो लास्ट वाला ट्राई करो, लास्ट वाले से बात नहीं बनती तो कम से कम वो वाला देखो जो तुम्हारे कोड की वजह से आ रहा हो, ना कि लाइब्रेरी का कोड पढ़ो। अगर वो भी काम नहीं करता है तो अपना सारा कोड कमेंट करो और वो कोड धीरे धीरे स्टार्ट करो ऐड करना, और फिर उसके बाद आपको बेहतर पता चल जाएगा कि कहाँ पे, हाँ ये अच्छी टेक्निक है। ये मैं ऐड कर सकता हूँ। प्रो एरर हैंडलिंग टिप इज हेयर। ये मैंने क्या कर दिया? अरे नहीं, मैंने गलत कॉपी करा है, मुझे इसको ऐसे कॉपी करना था। कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, हेयर को यहाँ, एंड ये हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक दिस। नो न्यू चैट, नथिंग इंफॉर्मेशन हेयर, बट ठीक है कोई बात नहीं। स्ट्रीम तो चल रही है अपनी, 50 मिनट हो गए हैं ओबीएस के टाइमर पे। वैसे 8 मिनट रहते हैं, 10 मिनट और भाइयों, उसके बाद फिर 1 मिनट, 1 घंटे का मार्क पूरा हो जाएगा। 1 मिनट, ट्विच पे 50-40 और यूट्यूब पर 51-4। हाँ आई गेस मैंने बीच में इंटरवल दिया था।
अब आते हैं फाइनली पहले चैप्टर की समरी पर। सी प्लस प्लस हर जगह है और कहीं भी यूज़, हर जगह यूज़ हो सकती है। इवॉल्विंग लैंग्वेज है, नया स्टैंडर्ड हर 3 साल में आता है और डिसाइड होता है WG21 ऑफ ISO। एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, हमें एक कंपाइलर चाहिए जो हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से सपोर्ट कर सकता है। कई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अवेलेबल है, लेकिन सी प्लस प्लस से हमें सॉलिड ग्राउंड मिलता है और टेक्निक्स और आइडियम्स की जानकारी मिलती है। कोई एक कंपाइलर आपका पूरा फीचर सपोर्ट नहीं कर सकता लेटेस्ट वर्जन का भी, तो आपको गोड बोल्ट और सी प्लस प्लस इनसाइट को ट्राई करना चाहिए शॉर्ट स्निपेट्स पे, ताकि चेक कर सके कि वो कंपाइल होते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, किस वर्जन में हो रहे हैं वो भी जानकारी मिल जाएगी। एक पूरा प्रोग्राम कोड करना बहुत ही अच्छा तरीका है लर्न करने का। तो हम इस पूरी बुक के आने वाले चैप्टर्स में यही करने वाले हैं। मैं लास्ट वाली लाइन छोड़ के बाकी सारा कॉपी करके समरी नोट डाल सकता हूँ एंड गो। लेकिन मुझे ये रिप्लेस करना होगा क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। Ctrl+H, रिप्लेस दिस, रिप्लेस ऑल। अब मुझे बैठ के इन्हें सीरियलाइज करना होगा। ओह गॉड, मैंने एक स्पेस देके गलती कर दी। ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड। रीडिंग मोड में कैसा लगता है? ये एडिट मोड है, ये रीडिंग मोड है, दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, इसी के साथ पहला चैप्टर ख़त्म होता है भाइयों। चैप्टर 2, कंटेनर इटरेटर्स एंड रेंजेस। ओके, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसके बारे में। चैप्टर कवर करता है कि हम कंटेनर्स को फिल करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, वो भी फैक्ट वेक्टर ऑफ नंबर्स के फोकस से। रेंज बेस का फॉर लूप और ऑटो कीवर्ड का यूज़। एक कंटेनर वो भी स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स का यूज़ करके और फॉर्मेट का यूज़ करके आउटपुट डिस्प्ले करना हो। साथ ही साथ रेंजेस, व्यूज़ और लैम्डास के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ओके, सॉरी। टाइमर पे हुए हैं 54 मिनट। मेरा OBS और ट्विच का टाइमर सही मैच करके चल रहा है। यूट्यूब ही है जो थोड़ा आगे है। एक्चुअली यूट्यूब आगे नहीं है, यूट्यूब ऑलरेडी 1 घंटे का मार्क का पार कर चुका है। एनीवेज, कंटेनर्स वो एल्गोरिदम्स बेसिकली सी प्लस प्लस का फंडामेंटल पार्ट है काफ़ी टाइम से। कंटेनर्स के अंदर कई सारी सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि वेक्टर एसोसिएटिव कंटेनर, जैसे कि मैप। और सी प्लस प्लस 11 स्टैंडर्ड के बाद से अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स, जिनका दूसरा नाम है अनऑर्डर्ड मैप कंटेन, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब कंटेनर्स मैनेज करते हैं एलिमेंट्स के स्टोरेज को, और इसमें डेटा का सेपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की सेपरेशन हमें एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है। साथ ही साथ हमें अलाउ करती, एक एल्गोरिदम को अलाउ करती है कि वो दूसरे अलग वेरियस कंटेनर्स पर अप्लाई किए जा सके। और रेंजेस के एडिशन से कोर लैंग्वेज में ये हमें हासिल हुआ कि हम एक सिंप्लीफाइड वेज का यूज़ करके एक्सेस और मैनिपुलेट कर सके कंटेनर्स को। और इन फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल, जो कि बेसिकली ऐड किया जाता है किसी भी एडजेसेंट नंबर्स को किसी भी प्रीसीडिंग रो से, और जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एक सिंगल वन इन द फर्स्ट रो। ये एंट्रीज यूज़ की जाती हैं किसी भी
इवेंट कॉम्बिनेशंस के नंबर को काउंट करने की, और उससे भी कहीं ज़्यादा। इसका यूज़ करके हम वेक्टर्स में वेक्टर का यूज़ करके हम वैल्यू स्टोर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से, और फिर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एक वेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है, राइट कर सकता है डेटा स्क्रीन पर। हम ये भी जनरेट करके देखेंगे और कई सारी रोज को डिस्प्ले करेंगे, और ये भी जानेंगे कि वेक्टर्स कैसे काम करते हैं और उनका दूसरा उपयोग क्या है। उसी के बाद हम फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इससे हमें बाद में अपने कोड को टेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। हमें एक कंपाइलर, एक एडिटर चाहिए और एक आईडीई, अगर हम साथ में कोड करना चाहें। एक फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है ICO CPP ऑर्गेनाइजेशन के गेट स्टार्टेड पेज पे। हम जो यूज़ करेंगे वो एक विक्चर है, विम विद GNU कंपाइलर कलेक्शन, वो भी विंडोज़ के WSL सबसिस्टम में, और साथ ही साथ विजुअल स्टूडियो 2022 का कम्युनिटी एडिशन, जिसके अंदर std:/C++ लेटेस्ट है, यानी कि C++ कमांड लाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बहुत है आज के लिए, इतना इंट्रो एंड मोर थिंग्स। 1 घंटे का सेशन ही हुआ, लेकिन ठीक है, मेरे लिए इतना बहुत है। आई विल बी एबल टू मेक नोट्स ऑफ दिस एंड मेक श्योर कि ये कल को गो थ्रू करना है तो इसी को ही लगा दूंगा। 1 घंटा बहुत था मेरे लिए। ओके, एंडिंग दिस स्ट्रीम नाउ। ऑलरेडी 12:30 हो गया है मार्कर। ओके, वी हैव रीच्ड द 12:30 marker officially now. Thank you.